Okay, this is the new lecture, implicit differentiations. So let's start. So in implicit differentiation, there are certain number of steps to be followed. So the problem solving strategy will be given here. So इसको हमने follow करना है. To perform implicit differentiation on an equation that define a function y implicitly in function of x. So what does this mean? कि मेरे पास अगर कोई भी वेरिएबल है y जो implicit terms की वेरिएबल x में डिफाइन हो रहा है. Let us say that take the derivative of both sides of the equation and keep in them with y is a function of x. इसका मतलब ये है कि मेरे पास इसका डेरिवेट ले लेना है. ठीक है, डेरिवेट लेके d अपॉन डी एक्स विल बी साइन ऑफ x विच विल बी इक्वल टू कॉस x. ओके, अगर मैं x को की जगह y रिप्लेस करता हूँ दैट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x, इट विल बी कॉस ऑफ y और इसके साथ डेरिवेट हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स. इस केस में dx अपॉन डी एक्स तो आंसर वन आ जाएगा because we can use the chain rule to differentiate sin y with respect to x. Okay, so uh, this is basically the method that uh, um, I defined that d upon dx of sin x, this will be equals to cos of x. Okay, so this is the first step. Now second is rewrite the equation so that all terms of dy upon dx are on the left. हमने डिफरेंशिएट करना है कि मेरा dy अपॉन dx की जो है वो लेफ्ट पे हो एंड डू नॉट कंटेन dy अपॉन dx, यानी कि मेरे dy अपॉन dx की टर्म्स एक साइड पे हो, लेफ्ट पे हो और दूसरी साइड पे बाकी सारे वेरिएबल्स हो या इक्वेशंस हो. फिर मैंने क्या करना है, फैक्टर करना है dy अपॉन dx ऑन लेफ्ट, यानी कि डिफरेंट फैक्टराइज कर लेना है and then solve by dividing both sides on the equation appropriate algebraic expression. Okay, so these are the four steps. Again, I revise all four steps. First step is to take the derivative on both sides. Okay, so एक साइड क्या हो जाएगी dy अपॉन dx वाली और एक सिंपल जब dx अपॉन dx करेंगे तो उसका सिंपल उसका फंक्शन की वैल्यू आएगी. Then dy upon dx must be on left side and all other terms on the right side. फिर उसके बाद फैक्टराइज कर लेना है इस साइड को एंड देन विद यूजिंग algebraic expressions हमने इसको सॉल्व कर लेना है. So this is the basic four steps involved in solving the implicit differentiation. Let's start with the question. Okay, assume that y is defined implicitly by an equation y square plus x square plus y square equals to 25 and we have to find dy upon dx. So how to do it? So first I have to take the derivative d. Step one is I will move step by step. Step वन में हमने क्या करना है, step वन में हमने डेरिवेट लेना है d upon dx on both sides. So it will be d upon dx of left hand side is x square plus y square and second side is my that is right hand side which is 25. Okay, so this will be d upon dx of value x square plus d upon dx of value y square, and this is the differentiation of 25. So 25 differentiation equals to 0. उसके बाद में डिफरेंशिएट करना है x square को, so it will be 2 of x और dx upon dx answer will be 1 plus y2 को करूंगा तो it will be 2y dy upon dx equals to 0. Okay, so this is my first step.
सेकंड स्टेप में मैंने क्या करना है कि मैंने dy की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, बाकी सब टर्म्स को राइट साइड पे ले जाऊंगा। तो स्टेप 2 विल बी 2y dy अपॉन dx विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो टर्म है 2x उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, सो इट विल बी -2 ऑफ x। ओके, दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप 3 विल बी स्टेप 3 विल बी मैंने इसको क्या करना है, सिंपल डिफरेंशिएट करना है और अलजेब्रिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। सो इट विल स्टेप 3 एंड स्टेप 4 विल बी dy अपॉन dx। अब ये 2y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस जगह इक्वेशन की उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बी 2y again by using the cutting method, so 2 and 2 will be cancel out, so dy upon dx will be negative x upon y. So note that the resulting expression for dy upon dx is in the term of both variables. मेरे पास दोनों variables के है x which is independent variable and the dependent variable is y. Okay, so implicit functions के अंदर मेरे पास जो x जो है वो independent variable है, जबकि लिख लें यहाँ पे जो x है, x is my independent variable, an implicit independent variable, and y is my dependent variable. So dy, it may be possible to express dy upon dx in terms of x only. It is generally not possible to do so. So this is the way कि हम अपने सिस्टम के अंदर कैसे implicit equation सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टेकिंग डेरिवेटिव dy अपॉन dx ऑन बोथ साइड, फिर उसमें dy अपॉन dx को लेफ्ट साइड पे लेके फिर इक्वेशन को अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं। So next question is I have to solve this. X cube sine y plus y 4x plus 3. Okay, so how to do it? So firstly I have to take the derivative on both sides, d upon dx, x cube sine y plus y equals to d upon dx with 4x plus 3. So after this, it will be written as d upon dx x cube sine y plus d upon dx with y कि हमने सेपरेट कर लेनी है अपनी इक्वेशन। सो d upon dx with 4 of x plus d upon dx with the value 3. ओके, नेक्स्टली हमने x क्यूब साइन x को करना है। अब इसके अंदर दो मेरे पास फंक्शंस हैं, x क्यूब एंड साइन y। so how to solve it? इसमें मेरे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा and this will be solved as derivative of first, that is 3x square, second as it is, plus taking the derivative of second sine y ka, so it will be cos y and dy upon dx, and first as it is, that is x cube. Okay, and dy upon dx, so it will be simply dy upon dx, and it will be written as d upon dx of 4 of x, so it will be 4. Okay, now it will be written as कि यहाँ मेरे पास
dy upon dx कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं. I will write here that it is x cube uh, x cube, then it will be basically cos y. So x cube, this is cos y dy upon dx plus dy upon dx and 4 minus ये इधर आ गया तो it will be minus, that is 3x square sine of y. So this is the method कि हमने कैसे अपने सिस्टम को इस तरह लिखना है. ठीक हो गया. अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है. दिस इज माय सिंप्लीफाइड. अब इसके बाद मैं इसमें ये मेरे पास y की टर्म आ गई dy अपॉन dx और इसमें ये सेकंड टर्म आ गई. अब dy अपॉन dx इसमें से कॉमन ले लूंगा, सो इट विल बी x क्यूब cos y प्लस 1 और ये इधर आ जाएगा. देन अगेन इस टर्म को जो मैंने कॉमन लिया इसको उस तरफ डिवाइड कर लूंगा. so by dividing this dy upon dx so dy upon dx equals to 4 minus 3x square sine y divided by x cube cos y plus 1. So this is the value of my derivative of function with respect to y. Now take, this is the question which take the double derivative of my system. So मुझे ये पता है कि ये जो इक्वेशन मैंने लिया है क्वेश्चन that x square plus y square equals to 2. So this is the x square plus जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव है minus x upon 2. ये सेम आपने प्रोसेस करना है इन पेपर. ठीक है. लेकिन हमने मुझे पता चल गया कि माई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई. सो आई कैन राइट दिस d upon dx with again dy upon dx and then d upon dx with negative x upon y. So I can write that d square y upon dx square और यहाँ मेरे पास क्वेश्चन रूल लग जाएगा. देयर इज अ नेगेटिव साइन जो बेसिकली बाहर आ जाएगा मेरे पास, ये नेगेटिव जो, एंड देन द स्क्वायर ऑफ denominator as it is, derivative of first, so it will be 1, then minus denominator का derivative and numerator as it is. Okay, so it will be minus of y minus dy upon dx divided by y square. Now it will be minus minus that will be minus and minus will be plus, so it will be minus y plus. Now dy upon dx की वैल्यू क्या है? ये मेरे पास it will be minus x upon y जो मैंने पहले derive की है. So I have to replace this value with minus x upon y with the x divided by y square. So I can write as minus y minus x square divided by y whole divided by y square. फिर उसका एल्सियम लेके दिस इज माय लास्ट आंसर, दैट इज minus y square minus x square divided by y cube. ओके. एज अब यहाँ पे जो मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म आई है, दिस वैल्यू इज
माइनस, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ इस वैल्यू में से, सो इट विल बी वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र divided by y cube. So x square plus y square, y square is equals 25. So it will be written as minus 25 upon y cube. So this is the complete solution. अगर मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव आ जाता है, वो मैंने आपको पहले सॉल्व करवा दिया, देन दी डबल डेरिवेटिव के केस में ऐसे सॉल्व होगा. ओके, फाइंडिंग द टेंजेंट. टेंजेंट फाइंड करने के लिए सिंपली मैंने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है dy अपॉन डी एक्स. तो इस इक्वेशन की जो डेरिवेटिव मैंने फाइंड किया दैट इज माइनस एक्स अपॉन वाई, जो कि मैंने प्रीवियसली आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया. अब इसके पॉइंट्स क्या, x3 है, -4 है, तो इट विल बी माइनस फॉर इस फॉर्मूले में है, और x इज 3 डिवाइडेड -4, so माइनस माइनस विल प्लस. सो दिस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ m. तो मुझे क्या पता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x minus x1. So it will be y minus minus will be plus, so it will be plus 4 equals to 3 upon 4 into x minus 3. That will be written as y plus 4, which will be equals to 3x by 4 minus 9 by 4, and again y equals to 3x by 4 minus 9 by 4 minus 4. Then taking the LCM of these two, तो मेरे पास आ जाएगा 3x by 4 minus, taking the LCM which is 4, 9 will be 9, and then there is also minus 9 and minus 4 times 16, so it will be minus 9 minus 16, that is minus 25. So my equation of y equals to 3x by 4 minus 25 upon 4. तो बेसिकली ये पॉइंट मेरे पास बता रहा है कि जिसमें मेरी एक ये स्केयर है, बेसिकली स्केयर प्लस स्केयर, तो दिस इज अ सर्कल, और एक लाइन से टच कर रही है जो इसका टेंजेंट है, उसका पॉइंट क्या है, एक्स में 3 वाई में -4, तो x3 विल बी दिस पॉइंट, ओके, एंड माइनस वाई इज दिस वन, सो दिस इज माई पॉइंट 3 -4, और ये मेरी इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ लाइन है, बेसिकली y इक्वल 3x अपॉन 4 माइनस 25 अपॉन 4. ओके, ओके देन. अब मेरे पास इसमें एक इक्वेशन गिवन है और एक ग्राफ गिवन है. दिस इज द इक्वेशन क्यूब, और ये मेरे पास टेंजेंट लाइन एक्स एक्स और वाई की वैल्यू है जो यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है. एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ माय दिस फंक्शन, दैट इज वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3xy. सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. मैंने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. सो हाउ टू डू इट. सबसे पहले मैंने उसी का डेरिवेटिव ले लेना जो मेरी इक्वेशन गिवन है, टेकिंग डेरिवेटिव dy अपॉन dx ऑन बोथ साइड. सो इट विल बी 3, दैट सो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर. अब यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, सो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. सो फर्स्ट का डेरिवेटिव x जो है, बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लग जाएगा, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव दैट इज 3. सेकंड फंक्शन में मेरे पास क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट एज इट इज विद 3 मल्टीपल, 3 कोफिशिएंट है क्योंकि सारों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. आफ्टर दैट मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी, इट विल बी 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, देन प्लस 3x with dy upon dx, and it will be equals to 3y minus 3x square. अब यहाँ से मैंने dy upon dx कॉमन ले लिया, so it will be dy upon dx taking common, so it will be 3y square, and then sorry, it is a minus minus will be plus, so there is not plus, there is a minus sign, minus here. Okay, so again
3y square minus 3x, and then it will be 3y minus 3x square. So dy upon dx will be 3y minus 3x square divided by 3y square minus 3 of x. अब मेरे पास जो दो वैल्यूज हैं, दिस इज x वैल्यू एंड y वैल्यू. अब x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर देना है. ओके, दिस इज माय dy अपॉन dx. अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, अपने फंक्शन में dy अपॉन dx के फंक्शन में 3 y वैल्यू x y की वैल्यू मुझे गिवन है, y वैल्यू इज 3 अपॉन 2 minus 3 into x value is also 3 upon 2 whole square whole divided by 3 upon 3 divided by 2 whole square minus 3 upon 3 upon 2. Okay, so after the simulation, after all the work, this equals to minus 1. That is my slope. तो डेरिवेटिव की वैल्यू dy upon dx आ गया. तो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी, y equals y minus y1 equals to x m x minus x1. So we can write as y then minus 3 upon 2 equals to m value is minus 1 with x minus 3 upon 2. Okay, so it will be written as y minus 3 upon 2 minus x plus 3 upon 2. So y ये उधर चला जाएगा, y equals to minus x plus 3 upon 2 plus 3 upon 2. So plus 3 upon 2 plus 3 upon 2 ये मेरे पास आ जाएगा. लेकिन जब एलसीएम लूंगा, so it will be x plus 2 LCM and 3 plus 3, that is 6 upon 2. So मेरे पास आंसर आ जाएगा 3. So y equals to minus x plus 3. So this is the way that I solve the complete equation. Now applying implicit differentiation to find this. अब मेरे पास एक रॉकेट की जो स्पीड है, which is basically given here, और उसमें मेरे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, एफ मिसाइल और मिसाइल की लोकेशन ये गिवन है. ठीक है. In a simple video game, a rocket travels in an elliptical orbit, जिसकी इक्वेशन ये है. The rocket can fire missiles along the path. The object of the game is to destroy incoming asteroid traveling along the position x towards 0, 0. That is my origin. If the rocket fires a missile with when its location at 383 comma this is x and y, where will it intersect with x-axis? Okay, so again मैंने tangent, intersection means tangent कि कहाँ मेरे पास tangent बनता है. Again मेरे पास जो equation है, that is 4x square plus 25y square equals to 100, and then taking the derivative d of x, that is 4x square plus 25y square, which will be equal to d upon dx of what, 100. So for this it will be 8x plus 50y, okay, dy upon dx equals to 0. So after simplification it will be minus 8x divided by 50y. So simplify it, so it will be minus 4x divided by 25y. तो ये मेरी dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई जनरल. अब मेरे पास x और y टर्म्स क्या है, 3 एंड x 8/5. तो x की जगह मैंने रिप्लेस क्या करना है, आई रिप्लेस x with 3 upon 3 and y with 8/5. सो इससे मेरी जो m की वैल्यू आ जाएगी वो minus 3 upon 10 है. सो माई m वैल्यू इक्वल्स टू minus 3 upon 10. So I can write my equation as y minus y1 equals to mx minus x1. So it will be y minus 8/5 with the m value is minus 3 upon 10 with x minus 3. Okay, so इसके बाद make y minus 8/5, it will be equals to minus 3x upon 10
and minus minus will be positive, so it will be 9 upon 10. Okay, so after the simplification, y equals to minus 3 upon x. अब मैं इसे minus 8 upon x को इधर ले आऊंगा after simplification, so it will be minus 3x 3 by 10x plus 5 upon 2. This is my equation. And अब मैंने intersection of points find करनी है. So ये तो मेरे पास जनरल इक्वेशन आ गई, that is y equals to y equals to minus 3 upon 10x plus 5 upon 2. So I will write this as, अब मैंने x की वैल्यू x where it intersect the x, so to find x जो भी कोऑर्डिनेट अगर मैंने x फाइंड करना है तो y को मैं 0 ले लूंगा, so it will be 0 into minus 3 upon 10x plus 5 upon 2, so it will be 3x divided by 10 equals to 5 upon 2. 3x will be equals to 10 multiplied by 5 divided by 2. So it will 2 with 5, 25. So x equals to 25 divided by 3. So this is the value, that 25 upon 3, and with y-intercept equals to 0. ये मेरे पास intersecting coordinates आ गए. So this is the end of today's lecture. So hopefully we continue the last topic of chapter number 3 in the next lecture. Goodbye and Allah Hafiz.